Hello and welcome to History Classes. This is Class 9th Geography Textbook and we are doing chapter number 2 Atmosphere, Structure, Air Pressure and Wind System. इसका पहला भाग introductory भाग already uploaded है. You can watch that. Today we will be starting with the next topic. So before moving ahead, I would like you to give you some important online safety rules. Okay. So you might be using social media, okay, and you might be having social media accounts of your own. So for ensuring online safety, so these things you can follow कि कभी भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल स्ट्रेंजर के साथ शेयर ना करें. Likewise, you lock your houses, okay, ताकि कोई unwanted people आ ना जाए. वैसे ही you should treat your social media accounts as something private, okay, so that the strangers, unknown people, or even some people whom you would not share anything otherwise should get insight into your personal life. Number two is keep your privacy settings optimal so that it is not easy to get access to your personal information or personal pictures. Personal information like it can be school or institution in which you are studying or tuitions where you are going, and number B will be where you are living, your home address. Okay, and other such personal details. And it is better that you don't trust strangers online. Okay, however sweet they may appear. Okay, yeah, so that was it. Let us study. Let us start with the topic today. So structure of the atmosphere. Today we will be studying the structure of the atmosphere. We will be studying about the various gases, that is what composes atmosphere, and their characteristics and how they are useful in the earth. Okay, we will be also studying something about water vapor and dust particles, which are also composing the atmosphere on the earth. So it is already mentioned that the atmosphere extends vertically up to some height from the Earth's surface. Okay, and it is composed of various gases, water vapor and dust particles. तो 10,000 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से, सपोज 10,000 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से the atmosphere is present. And it is composed of various gases, water vapor and dust particles. Okay, so it needs to be mentioned that the composition and characteristics of atmosphere vary slowly with altitude from the Earth's surface. That is why with increase in altitude, the volume of gases and other elements present in the atmosphere changes and density, pressure and temperature of air change. So very simple to understand. Let me draw a diagram. Okay, let us delete this. So this is our beautiful blue earth. Okay. And atmosphere, we already know that it extends vertically up to 10,000 kilometers from the Earth's surface. So this is whole atmosphere. We are sinking in the atmosphere. हम लोग atmosphere में डूबे हुए हैं. Okay. So this is all atmosphere. I hope you get the idea.
Yeah, so here we are. So yeah, we might be thinking कि एटमॉस्फेयर जो 10,000 किलोमीटर तक वर्टिकली राइज है ये पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा कॉम्पोजिशन, डेंसिटी पूरा सेम होगा बाहर तक, लेकिन ऐसा नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अर्थ के सरफेस के पास यहाँ तक सपोज कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम गैसेस का अलग है. ऊपर थोड़ा ऊपर चले गए, वहां पे और अलग है. और ऊपर चले गए, नीचे जैसा था कंपोजिशन या फिर वॉल्यूम एयर का वैसा नहीं मिलेगा. और ऊपर चले गए और कम हो गया. तो वो अलग अलग spheres है. Okay, we will be studying that: stratosphere, ionosphere, exosphere, etc. So meanwhile you understand this. So that is why it is said that composition and characteristic of atmosphere varies slowly with the altitude from the earth's surface. जैसे जैसे altitude मतलब हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहेंगे हमें एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. Okay, so that is why with increase in altitude, the volume of gases and other elements present in the air atmosphere changes, density, pressure, temperature of air change. Okay, so among the various changes in the atmosphere, there is predominance of, among the various gases in the atmosphere, there is a predominance of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस है, अलग अलग गैसेस है. सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78%, वहीं ऑक्सीजन का शेयर है 20%. उसके बाद आते हैं अदर गैसेस जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ओजोन, xenon are worth mentioning. So this is the table. Go through it. So the volumetric amount of gases as mentioned in the table 2.1 does not remain the same at all altitude levels. जो volumetric percentage है ये however सब gases का हर altitude में same नहीं रहेगा. We have already seen that. अलग अलग volume में change होता रहेगा. अर्थ के surface के पास, suppose अर्थ के surface के पास इसका ये वॉल्यूम रहेगा. ओके, जो दिया हुआ है ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे कम होता रहेगा. और 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ये ऑल्टीट्यूड. सो वी विल सी दैट द गैसेस which are heavier such as nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide are found to be confined to an altitude of only 80 to 100 kilometer. 10,000 किलोमीटर में 10,000 किलोमीटर में only altitude of only a small portion तक, only a small height तक ये heavier gases है. ठीक है. Beyond this altitude the gases become rarefied. These gases यहाँ पे बस बहुत कम हो जाते हैं. Beyond this, okay, rarefied, scanty हो जाते हैं, composition में मिलता ही नहीं है. That is why अगर suppose if we are residing on plains, हमें abundant ऑक्सीजन और अदर गैसेस मिलेंगे. लेकिन जैसे हम लोग सपोज हिली एरिया में जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन जैसे कि हिमालयन रीजन, हमें बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे, क्योंकि गैसेस बहुत कम है वहाँ पे.
तो इसलिए आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त या फिर कोई भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जो पहाड़ है उस पे चढ़ाई करते वक्त द क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज अर्थ के सरफेस पे ही है लेकिन ऑल्टीट्यूड ज्यादा है तो ये गैसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, 100 किलोमीटर के बियॉन्ड ऑल्टीट्यूड होने से ये गैसेस वैसे ही कम मिलेंगी उनको। या सो इट मीन्स द एटमॉस्फेयर largely contains sorry largely contains the extremely lighter gases like helium, hydrogen. So जो ये गैसेस है यहाँ पे कौन सी गैसेस मिलेंगी हमें? Lighter gases such as helium and hydrogen. Okay, I hope it's not a mess. Oops. Yeah, so you might have seen a balloon. अगर उसको छोड़ दोगे तो वो ऊपर चली जाती है. That is nothing but made of हाइड्रोजन और हीलियम बैलून. मोस्टली हीलियम बैलून ही होता है. सो इफ यू कैन ट्राई टू बाय अ हीलियम बैलून एंड देखना वो आपकी सीलिंग पे ही रहेगी. ओके, वाटर वेपर and dust particles present in the atmosphere are also confined to its lower layer. So gases के साथ, इन heavier gases के साथ और कौन सा चीज और कौन सी other particles लोअर लेवल पे रहते हैं, मतलब 80 to 100 किलोमीटर तक रहते हैं, वो है water vapor and dust particles. Understood? So that is why the number of gases and other elements present in the atmosphere and their volume and density decrease with the increase in altitude from the Earth's surface. So जो हमने पढ़ा उसी को समराइज किया हुआ है. जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट पे जाते रहेंगे वैसे ही इन गैसेस का वॉल्यूम कम मिलेगा हम लोगों को. So कुछ गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर यूजेस ऑन अर्थ के बारे में let us study. So nitrogen, which is found in the largest volume in the atmosphere, is an inactive gas. वो किसी के साथ react नहीं करता है. Okay, ठंडा मुंडा है. Okay, some of the students in your class, your friends, बोलते हैं ना teachers, that बहुत ही शांत बैठा रहता है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से दोस्ती. तो नाइट्रोजन का भी यही हाल है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से दोस्ती, वो ऐसे ही है. Okay. So of course, लेकिन उसका यूज है ऐसे ही नहीं है. उसका यूज है बाय बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ द अर्थ. ये क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल में, उसको कुछ और चीज में कन्वर्ट कर देती है, अलग नाइट्रोजन के अलग रूप में, और वही अलग रूप यूज होता है बाय प्लांट्स. ओके, दिस यू विल बी स्टडीइंग properly in your biology classes. So on the other hand, we see that oxygen is a chemically very active gas. One second. It's a very active gas. So highly active है, सबके साथ दोस्ती है इसकी, सबके साथ झगड़ा भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, बहुत उत्पात मचाता है. So like many others gets easily combined with many elements through the process of oxidation. Through the process of oxidation वो other elements के साथ भी combine कर लेता है. You might be studying this in your chemistry classes. All the living organisms, including plants, obtain their energy from oxygen. We know that. Argon, with less than 1% of the atmospheric gas. So argon is also a chemically inactive gas. So दो inactive gas मिल गए हमें, nitrogen and argon. Argon gas is generally used in making electric, लेकिन उसका यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने में, वेल्डिंग वर्क करने में. Although the amount of carbon dioxide present in the atmosphere is negligible, मतलब ना के बराबर है carbon dioxide in our atmosphere. Carbon dioxide का contribution बहुत बहुत significant है. Why? Because it controls atmospheric processes. क्या है? We will know it. And climate of the earth surface. अगर carbon dioxide नहीं होता
तो अर्थ बहुत ही ठंडा पड़ जाता एंड उसमें जीवन जो लाइफ है, लाइफ को सपोर्ट नहीं मिल पाता। सो कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्पेशल टैलेंट है, वो टैलेंट है इसकी हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी। ओके, so carbon dioxide which is sorry the heat which is present in the atmosphere, carbon dioxide so carbon dioxide which is present in the atmosphere, it absorbs solar radiation reflected from the earth's surface. So let us understand this through a small diagram. This is earth, this is our sun, इसकी रोशनी अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो अर्थ क्या करता है इसको, it reflects from its surface obviously, है ना। तो रिफ्लेक्ट करने के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेट अस डिनोट दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ग्रीन कलर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कम अमाउंट में, वो इस जब रेडिएशन बैक में जा रहा होता है तो इसको ट्रैप कर लेता है अपने पास में। ओके, और इसी वजह से हमें अर्थ में गर्मी का एहसास होता है। अंडरस्टूड? ओके, या सो इट क्रिएट्स अ कंजीनियल एट टेम्परेचर, मतलब favorable temperature condition necessary for the survival of plants and animal। उतना टेम्परेचर मेंटेन करता है अर्थ में जैसे कि एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर सके। It is notable that the man and other animals take oxygen during inhaling, we know that, and they release carbon dioxide into the atmosphere. On the other hand, plants use carbon dioxide, इसलिए ज़्यादा पेड़ लगाने को बोलते हैं, because plants use carbon dioxide and for photosynthesis, for production of food, and they release oxygen. In this way, what happens is that plants and animals एक बैलेंस बनाकर चलते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज ऑफ मैन, ये जो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए था वो बिगड़ गया है और ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के सरफेस अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपना काम कर रहा है, वो क्या है, जो सन की रेज है उसको ट्रैप करके रख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस में वी सी इट्स हीट का राइज हो रहा है। जितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उससे ज्यादा अर्थ में टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन हो रही है अभी। ओके, सो मैन मेड कारणों की वजह से, बिकॉज we are using coal, petroleum gases which emit large amount of carbon dioxide, carbon monoxide, methane, greenhouse gases and other activities की वजह से, जैसे कि deforestation की वजह से, so amount of atmospheric carbon dioxide is increasing। ठीक है, so जैसे बोलते हैं excess of anything is bad, so excess of carbon dioxide is doing us so much harm। Again, even though the amount of ozone gas, अभी ozone gas के बारे में पढ़ते हैं। Okay, so let me first delete it।
Let me keep the sun. So yeah, again, it's Earth, beautiful blue Earth. Okay, so कुछ ऊपर 40 to 50 किलोमीटर क्या है, एटमॉस्फेयर में एक गैस है, और ओजोन बोलते हैं उसको, उसका लेयर है. ओजोन इज नथिंग बट O3. ओजोन इज नथिंग बट O3, ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है. So what does this O3 does is, सन ऑफ कोर्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे कुछ हार्मफुल किरणें आती हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस. ओके, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस एक यूवी रेज आती है. सही रेज के साथ साथ, आई मीन द रेज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दिस रे, ये तो पहुंचनी चाहिए यहाँ तक, लेकिन उसके साथ एक खतरनाक रेज भी आती है, यूवी रेज, which is very dangerous for us, plants and animals के लिए. तो ये जो ओजोन लेयर है वो क्या कर लेता है, इसको यहीं पे ट्रैप कर लेता है, फर्दर यहाँ पे आने नहीं देता है, फिल्टर कर देता है. ओके, so it has been saving the entire living world by absorbing the sun's ultraviolet radiation, dangerous to both plants and animals. Besides, water vapor के बारे में जानते हैं. So water vapor is present in the lower atmosphere only. It also absorbs solar radiation and it maintains a balanced condition of atmospheric temperature, congenial to living world, so that it neither becomes too cold nor too hot. ठीक है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर सबसे सही है, that is why we can survive. Similarly, the dust particles floating in the lower atmosphere are no less important. कैसे? In fact, the water vapor present in the atmosphere gets condensed to form clouds and gives rains by sheltering on this tiny dust particles only. So, जो clouds formation we see, it's nothing but water vapor जब कंडेंस हो जाता है, वो शेल्टर कहाँ पे लेता है? We have studied water cycle. Okay, so कंडेंस फॉर्म में वो 10 पार्टिकल के साथ ही चिपक के रह जाता है. So cloud formation is nothing but water vapor getting condensed on this dust particles. So that was it for today's lesson. I hope it was useful to you. If you have any doubt, please ask me. Okay, thank you so much.